Fine. So here we are talking about loops today. And what do I call my loop construct? I also call it as an iteration-based construct, iterative construct. Why? Because repetition is involved in that. Set of statements, repeated. एक बार, दो बार, तीन बार. Okay. So when I talk about repetition, I talk of this kind of a structure. I call it a flow chart here. And here we are seeing that you start the code, you can have multiple set of lines before that. But then there's a condition. If the condition is false, you stop it. The loop stops. This is a flow for the flow chart for only the loop structure which I'm talking about as well. If the condition is true, do the task again. फिर ऊपर चलेगा, फिर कंडीशन चेक करा, अभी भी ट्रू है, फिर से करो टास्क को. अगेन द कंडीशन इज ट्रू, फिर से करो टास्क को. सो जब तक कंडीशन ट्रू है, आई कीप ऑन रिपीटिंग माय टास्क. ठीक है? That's what a loop actually means. How are they implemented in Python? I just now said that it is talking about two statements. One is the for loop, one is the while loop. Right? When we start for a for loop setup, I have to tell him in this format. For a control variable in a sequence of items, colon, and then indent with the statements. These statements are, so it can be multiple statements, like if के अंदर I can give multiple statements, here also I can give multiple statements, but indent is important inside. Number one. Number two, what is this control variable? ठीक है? Up the example was I was giving you that I asked somebody to do push-ups. Now, while he's doing the push-ups, I'm keeping the count 1, 2, 3, 4. So I am the container who's counting the counts. Right? Here, there's no human involved, so there has to be a variable which has to be done. Okay, so I need a variable. Anywhere I need to keep the count, keep the data. I need a variable in Python. Now, by now you understand, not Python, I mean any programming language. That is my control variable. Because this is the fellow, he's keeping the count of the data. I also call this as the counter variable. He's the person who's maintaining the count. He's ultimately going to keep the count for me, that how many times has it happened. Right? So very important, it is just a variable. It can be Sushmita, it can be Bhuman, it can be Netik, any name. ABCD, 1, XYZ, any name. It's just a variable. Now, in tells you कि तुम क्या count करना चाहते हो. You want to count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. You want to count 10, 9, 8, 7, 6, 5. You want to count a gap of 5. You want to count ABCD, F, G, H. Just data. You will give him set of data elements. And जितने data elements आप उसको दोगे, वो उतनी बार लूप को चला दो. ठीक है? वो डेटा एलिमेंट का वैल्यू उठ के कंट्रोल वेरिएबल में आएगा और वो लूप चल जाएगा. फिर दोबारा जाएगा, वो डेटा एलिमेंट से एक एलिमेंट उठाएगा, कंट्रोल वेरिएबल में डालेगा और उसको चला देगा. ठीक है? That is how the format of the for loop looks like. Now let us see an example here. We currently don't know what a list is. So here you see that n is a list of numbers, but we have to study lists in detail. So it is just a set of numbers, you can see. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Just a set of numbers. When I want to give this kind of a set of values to the machine in Python, I use square brackets, and this kind of a structure is called a list. Right? It's just a list of numbers मान के चलो. अगर नहीं भी आता तो अभी सिर्फ हम मान के चलते हैं कि list of numbers. So I'm saying what? For num is my control variable, counter variable as I call it, in n. What is n for him? N is a list of values which is starting from 1 going till 10. That's it. In the statements, what I'm asking him to do, I'm asking him to do print the value of the counter variable. It is just a way I want to show you the things. You want to say print hello, so hello print karega utni bari. You want to do something else, वो करेगा. Abhi I'm just wanting to print the values of num to show you what is the counter variable picking up from the sequence or from the list. Right? Here you will find that list has, or n has,
1 2 3 4 5 6 7 9 10. In the same sequence, num picks up पहले 1, फिर उसको प्रिंट करेगा, फिर अगले सेट के लिए जाएगा, ऊपर जाएगा दोबारा. लूप में क्या है? रेपिटेशन है. लूप के अंदर, बॉडी के अंदर जितना स्टेटमेंट है एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद वापस इन द कंडीशन पार्ट, कंडीशन में उसको अगला नंबर मिला 2, 2 को नाम में स्टोर किया, फिर अंदर आ गया प्रिंट नाम, तो 2 प्रिंट हो गया. यू कैन सी द आउटपुट हियर. अगेन इट वेंट अप, picked up 3 from the sequence, gave 3 to num, print num, so 3 print हो गया. ठीक है? So that is how the for loop will work. Now designing the loop is my task for the job which I want to do. Why not just print n? Very good question, Vani. I can say print n, but then that print n will give me the whole list in one go, right? Now here I am printing the contents of n. तो ऑफ कोर्स आप कह सकते हो मैम इतनी खिचड़ी क्यों पका रहे हो, आप सीधा सीधा प्रिंट एंड करो, वो दे देगा मुझे सारे वैल्यूज. एब्सोल्युटली राइट. बट आई एम नॉट ट्राइंग टू टीच यू कि वो 1 to 10 को प्रिंट कैसे करना है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट हाउ द लूप इज वर्किंग. हर बार मुझे 1 to 10 तो प्रिंट नहीं करना. आई माइट हैव टू प्रिंट हेलो. अब हेलो को तुम 10 बार लिखोगे लिस्ट में एंड देन उस लिस्ट को प्रिंट करोगे, देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ राइटिंग लूप, है ना. माय फोकस हियर इज how do I make a loop work? What you print is an example for me. Very good question what you asked. Why not take this whole list and print it? But do you realize that I have written those values myself? I have not even made it generate himself. अगर ये 100 तक प्रिंट करना होता तो आप क्या पूरे 100 वैल्यू दिखते? फिर प्रोग्राम का फायदा क्या है ना. So my next question is, or my next what do you say concept is that कि मुझे अगर ये 1 to 10 नहीं लिखना, मुझे 10 टाइम्स लूप को एक्सिक्यूट करना है, लेकिन मुझे 1 to 10 नहीं लिखना इन द सिस्टम. सो क्या सोल्यूशन? Am I making myself clear, Mani? Is your question resolved? Yes, ma'am. Okay, great. Now I move on to the next story. Next story focuses on the fact कि मुझे 1 to 10 नहीं लिखना, मुझे 10 to 1 की वैल्यूज नहीं लिखनी, मुझे 1 to 100 की वैल्यूज नहीं लिखनी जितनी बार मुझे लूप को चलाना है. तो मुझे फिर क्या दे रहा है पाइथन उसके लिए? मुझे पाइथन दे रहा है, व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट इज द रेंज फंक्शन. And today, like, everybody seems to be against me, and even the PPT is not working. Excellent. And range को, because it doesn't work independently. Okay, right. I'll come to this slide later because we have done some working here also. I'm coming to range function first. Okay. So range function. Now, what is happening in the range function? I don't want to write 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. I want a ready-made function जिसको मैं बोलूँ कहाँ से काउंटिंग शुरू करो, कहाँ तक जाओ और कैसे इंप्लीमेंट करो. So can you see the range function structure? Start, stop, step. Okay. Now you may find certain things confusing कि why the square bracket or comma is in the square bracket. Any syntax if you see in computer languages and their syntax shows you a square bracket, that actually means that it is optional. मतलब I do not need to give start always. I may not give the start value always. If I'm not giving the start value, this comma is also not coming. I may not give the step value. It has got defaults. I may not give it. It's optional. And if I'm not giving the step value, I will leave the comma then. So comma and step and this size start and comma, they are my optional things. Hence they are the square brackets. ठीक है. अब वो क्या कहना चाह रहा है? वो कहना चाह रहा है कि तुम अगर स्टार्ट मुझे नहीं दोगे तो मैं 0 से काउंटिंग शुरू करूंगा. 0 से काउंटिंग शुरू करूंगा टू बी पॉइंटिंग आउट. 1 से काउंटिंग नहीं करूंगा. ओके. In Python, for counting positions, for counting this kind of things, it is always taking it up from 0, not from 1. सिर्फ एक लेंथ चीज है जो हम पढ़ेंगे बाद में. जब मुझे लेंथ ऑफ द डेटा काउंट करना है तो वो हमेशा 1 से काउंट होता है, लेकिन यहाँ पे हम उसको दूसरी तरीके से यूज करेंगे. दैट इज व्हाई रेंज फंक्शन स्टार्ट्स इज काउंटिंग फ्रॉम 0 until and unless you mention कि 100 से शुरू करो, 200 से शुरू करो, 10 से शुरू करो. So if the start value is not specified, by default it is 0. If the step value is also not specified, the default value is 1. So step value 1 means
every time increment by value by 1. Okay, every time increment by value by 1. I want to increment by value by 2, no problem, write 2. I want to decrement by value by 2, minus 2. Increment by value by 10, 10. Decrement by minus 10, minus 10. So it is a positive, negative value. दोनों हो सकता है उसके अंदर step value के अंदर. No problem. All parameters in the range must be integers, and you can have the step as positive or negative. No zero. ठीक है? Let's do some example. First one, range 4. अब जब एक वैल्यू उसको दिख रहा है रेंज फंक्शन के अंदर, इट इज स्टॉप वैल्यू. स्टार्ट भी नहीं दिया है, स्टेप भी नहीं दिया है, बिकॉज इन्हीं दोनों को आप स्किप कर सकते हो. आप स्टॉप को स्किप नहीं कर सकते. दैट इज कंपल्सरी. ओके, नाउ रेंज 4 मीन्स default of start is 0, so it will start with 0. Default of step is 1. Every time it will increment the value by 1. And one more thing to be taken care of, it does not include the stop value. It goes 1 less than that. That is a rule of range. आप इसको ऐसे समझ लो कि क्योंकि 1 से काउंट नहीं कर रहा है तो वो 0 से काउंट कर रहा है तो एक कम दे. You may just take it up like that. But even if you don't make him count from 0, it takes 1 less than the stop value. So that rule has to be kept in mind. That stop value, say 1 less value has to be taken. Right? Now, range 4 is 0, 1, 2, 3. Why 0? Because default of start is 0. तो 0 से start करा. अब 0 के बाद 1 कैसे आया? Because step value is 1 by default. तो 0 के साथ 1 ऐड करा, 1 आ गया. 1 के साथ 1 ऐड करा, 2 आ गया. 2 के साथ 1 ऐड करा, 3 आ गया. 4 हम नहीं लेंगे because 4 is my upper limit. I go 1 less than that. Why 1? Because I'm stepping by 1. Right? Try justifying for 3, 9, 2. 3 is start, 9 is stop, 2 is step. So 3 से start करा, first value is 3, plus 2, 5, plus 2, 7. Why plus 2? Because my step value is 2 here. And why not 9? Because I cannot move to 9. That's my stop value. ठीक है? Now negative में अगर हम जाना चाहते हैं, 10 to 0. 10 to 0 के लिए कंपल्सरी है कि आप यहाँ पे स्टेप वैल्यू दे, तभी वो लूप चलेगा, तभी वो रेंज वैल्यू फंक्शनल होगी. बिकॉज when you do 10 to 0 with a default of +1, it cannot move from 10 to 0. पॉसिबल नहीं है ना. इसको उल्टा जाना है. उल्टे के लिए आपको माइनस वैल्यू देना ही पड़ेगा. राइट? सो इफ यू हैव अ नोट पेंसिल विथ यू, प्लीज नोट इट डाउन. 10,0 is I will not say invalid statement because error नहीं देता. It doesn't give me any output. I'll show that to you because range को ना actually independently execute नहीं कर सकते. It has to be with the loop. So I cannot show you these outputs. हम लोग loop के साथ जब use करेंगे then I can show you the things. ठीक है? So 10,0 में by default अगर आपने सोचा कि भाई 1 वो ले लेगा automatically -1, it will not work because by default step is 1. 10 से 0 जाने के लिए +1 is not applicable, तो वो loop को execute ही नहीं करता. You get a no output situation, no error. Syntactically it is not wrong. Range can work with 2 inputs also. ठीक है? But logically wrong. 10 to 0 it cannot go with +1. ठीक है? It can go with -2. So no problem. 10 minus 2 is 8. 8 minus 2 is 6. 6 minus 2 is 4. 4 minus 2 is 2. 2 minus 2 is 0. My stop value is 0. So I will not pick up that. ठीक है? अब रेंज जो वैल्यूज जनरेट कर रहा है, the last two also is easily understandable. You can understand that. रेंज जो वैल्यूज जनरेट कर रहा है, उतनी बारी हम लूप को चलाएं. काउंटर वेरिएबल में पिक अप दीज वैल्यूज, बट पर्पस क्या है कि लूप उतनी बार चले. एक बार वो 0 के साथ चले विद द काउंटर वैल्यू है 0. एक बार वो 1 के साथ चले इफ आई एम सीइंग रेंज 4. एक बार वो 2 के साथ चलेगा, एक बार वो 3 के साथ चलेगा. ठीक है? पर्पस ये है. दैट इज व्हाई I can use a range. I may use a list of values if I want to. I may use a string. तो string में जितने elements होंगे उतनी बार loop चल जाएगा. Fine. Because my syntax say that
It can be a sequence of data. So even if you give a string, I give Sushmita. Sushmita is Sushmita, 8 letters. तो लूप 8 बार चल जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि उसके लिए वो सीक्वेंस है. ठीक है. Yes, Bhuvan, your stop value can be negative as well. If you do not have it negative, then you cannot go in the reverse order anytime. So negative is also allowed, but negative is allowed not by default. It doesn't appear by default. By default, it is a positive one only. अगर उसको नेगेटिव करना है तो आपको लिखना पड़ेगा. लाइक वी हैव रिटन -2 to -12 जाने के लिए उल्टा चाहिए तो -2 लिखना पड़ेगा. 10 से 0 जाने के लिए उल्टा जाना है तो माइनस आपको लिखना पड़ेगा. ठीक है. एनी अदर कंफ्यूजन इन द रेंज, बिकॉज दैट हैज टू बी अंडरस्टूड. वेरी इंपॉर्टेंट. एनी अदर कंफ्यूजन रेंज में कुछ और पूछना? अदरवाइज आई विल मूव अहेड नाउ टू द Sure. Okay. Let me come to the slide which I left, just to show you that inside the loop I may have if, inside if I may have loop. एक loop के अंदर multiple ifs, एक if के अंदर multiple loops. Everything is possible. Depends upon what you are trying to do. Now यहाँ पे अगर आप उस कोड को देखो थोड़ी देर के लिए, I give you a minute to see. एक general क्या हो रहा है? Again, I'm not using range here. So for him, the values which num will pick up, my counter variable will pick up, my control variable will pick up is 11, 12, 32, 45, 50, 66. जो नंबर्स आपने उसको दिए वो एक एक करके उठा. उसके बाद वो अंदर आएगा लूप के हर बारी. What will it do? If my value of num, so first value of num is 11, which it has picked up from the sequence. If it is divisible by 2, डिस्प्ले कर दो, वरना मत करो. वरना कुछ नहीं करा, बिकॉज मैंने एल्स नहीं लिखा है तो वो कुछ नहीं करेगा. फिर वो ऊपर जाएगा, अगली वैल्यू को उठाएगा. अब जब तक उसके पास ये वैल्यूज हैं एन के अंदर, ये लूप चलेगा. एवरी टाइम इट विल पिक अप द नंबर, check the value. If it is divisible by 2, print that value. So ultimately, what am I getting? I'm getting the print of all the even numbers from my list of values. देखो एक बार कोड को ध्यान से. Do you understand what I'm saying? Do you correlate with what I'm saying? Do you agree with what I'm saying? And then show me a thumbs up. That yes, you agree. I'm waiting for everybody's thumbs up. Do you understand what this code is doing? I just got one thumbs up from Bunny. I'm waiting for others. Do you understand what this code is doing? Okay, Naitik also says yes. Excellent. Waiting for Manvi, Woman and Ahana. For loop एक एक वैल्यू को उठा रहा है फ्रॉम द लिस्ट, उसको चेक कर रहा है. अगर वो डिविजिबल बाय 2 है उसको प्रिंट कर. डिविजिबल बाय 2 नहीं है तो वो कुछ नहीं कर. Ahana also saying yes. Excellent. I'm waiting for Woman and Manvi now. Any doubt? Just ask. बेसिक लूप को, लूप के स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है. Okay, I think I have a query. Okay, woman says yes. Waiting for Manbir now. Manbir, Yes, got ma'am. it? Okay, great. You've understood? Shall we move now? Yes, ma'am. Great. So now let us combine the learning of the range with my loop and practicing some set of questions on that. Okay. Chalo, let us do that. हमने range समझ गया कैसे range काम करेगा. Now let's take some very simple questions. These are your range based questions. You can try them out and see whether you understand it or not. Okay. कर ही लेते हैं उसको.
ठीक है. To generate the following numbers 0 to 9, what specification should be given? पहला वाला या दूसरा वाला? Or both are same, or both can be used, or one of them only can be. बता. First question. Ma'am, both can be used. Very good. What about others? 0 to 10, increment by 1 is also 0 to 9. 10 तक नहीं जाएगा. 10 is the stop value. The default start का 0 लेगा, step का 1 लेगा. Then also you will get the same set of values. है ना? Both. Excellent, Nitin. ठीक है? चलो, quickly try the next one. What list of numbers will the following command, range command generate? 2, 10. From the start value will be 2 and the end value will be 9. Very good. And increment by 1. Yeah, increment. So 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Others are also on the same page with me. Yes, ma'am. If anybody, if you feel that this will not happen, question me, stop me there. Otherwise, I'm assuming कि तुम्हें समझ में आ रहा है. Next one. 035. Okay, we have a chat answer. Looking for others also. Okay, previous one given, that's correct. But now I'm waiting for the third one. Beta. Your second का answer is absolutely correct. अब third वाला try करूँगी. 0 क्यों लिखा तुमने? नीचे. Right, kinetic. So exactly what are the numbers which you're going to get? 0 plus 5, 5 plus 5, 10, 15, 20, and not 25. No, 25 also, of course. It's still 30. Sorry. So up to 25. Correct. So I think you've understood it now. I can very well move forward. Now we have some set of very easy questions initially, and then we move further. Print the first 12 natural numbers, print some natural numbers in the reverse order, even numbers up to a particular value, odd numbers up to a particular value. So इसको हम लोग साथ साथ करते जाते हैं और हमें समझ में आता जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं. Let's see how many we can do in this particular time limit of my Zoom. Then we'll have another session. चलो, first 12 natural numbers हमें print करना है. Natural number starts from 1. है ना? Whole number starts from 0. 1. Correct. I go to file new because it's multiple statements. Correct. So अगर मुझे first 12 natural numbers print करने हैं, what should be my range value? Now see, I am used to writing I as my counter variable. आप कुछ भी लिख सकते हो as your variable name. The basic rules follow: no space, no special character other than underscore, cannot start with a digit. तो normal variable convention है, that you have to follow. अब range first 12 मतलब कहाँ से शुरू होना चाहिए? 1 से शुरू होना चाहिए. जाना कहाँ तक चाहिए? 12 तक चाहिए. 12 लिखेंगे तो वो 12 को प्रिंट नहीं करेगा, तो क्या लिखेंगे? 13. You want to write this one? Your wish, you may skip because step value is by default 1 only. Don't forget this colon. This is important. Right? Right, Tata. 113, 1 or only 1, 13? And because here I see that directly my values are coming in the counter variable, I don't need any other variable or I don't need any other work to do. So I can directly use this data to print it. मेरा I के अंदर values आ रही हैं, तो अभी के लिए तो मुझे वही values print करने. So let me print I directly. हमेशा ये जो I जो count कर रहा है मेरे लिए, I may not need that value in the loop. I may do something else. है ना? So हम करेंगे उस चीज को. Let us first check this part. 1 and execute it and simply see the output. 1 to 12. Simple and straight. ठीक है? If you have machine at your end, you can try that also simultaneously.
Now, who tells me for the next one? 10 natural numbers in reverse. Batao. Natural numbers means again up to 1, not up to 0. So, try karo. I'll keep on making it as comment. जैसे जैसे हम करते जाएंगे से कमेंट भी याद रहेगा कि मैम ने कमेंट कराया था, है ना? मल्टीपल लाइंस के लिए 3 single quotes. There is no space. It looks like that you have given space, but it is. देखो 3 बार ही कर्सर हिलेगा. 1, 2, 3. ठीक है? 3 single quotes to give multiple lines of comment. So this part will not execute. I've got a few answers. Let us check that. 10 natural numbers in the reverse order. Okay. So my answer says here, Nathik is saying 10 comma 0 comma minus 1. Excellent. Vani also saying 10 0 minus 1. Excellent. Anybody else? Woman? Any confusion in this? 10 natural numbers means 10 से तो शुरू करना ही है. देखो स्टार्ट हमेशा स्टार्ट से शुरू होता है, ये भी कंफ्यूजन हो जाती है कि स्टार्ट को भी हम एक एक्स्ट्रा या एक कम से शुरू करते हैं. नहीं, स्टार्ट जहां से बोलोगे वहीं से करेगा. स्टॉप में वो एक कम लेता है अगर आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हो, और एक ज्यादा आपको देना पड़ेगा अगर आप ज्यादा देना पड़ेगा अगर आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हो, और एक कम देना पड़ेगा अगर आप नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हो. ठीक है, उल्टा जा रहा है. सो 10 कॉमा 0. वाई 0? बिकॉज मुझे 1 तक आउटपुट चाहिए. एक और मैंने वैल्यू कम यूज, -1. ये थोड़ा सा ध्यान रखो. ठीक है, एंड प्रिंट टाइम. सो आई विल गेट टाइम. Excellent. Let us execute and check also once. Then we'll move to the third one. 10 to 1 done. अब देखो जो नंबर्स वो जनरेट कर रहा है हम उसी को उठा के प्रिंट कर रहे हैं. हम अभी और कुछ नहीं सीख रहे हैं इसके अंदर कि हम लूप के अंदर कुछ और कर सकते हैं. हम डायरेक्टली वी आर एक्चुअली इम्प्लीमेंटिंग द रेंज ओनली. As such, otherwise my loop is not doing anything else. But that's okay. Range में से हम डेटा उठा के डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं for this kind of situation. So we are doing it. All even numbers up to 20. Third one. Even numbers पता है हमें, इसीलिए we have taken up this question. Woman, I did not understand your this reply. What will be the output if you put 1 instead of -1? अच्छा, if you put 1 instead of, okay, again I had to show you that. I said there'll be no error. Would you point it out, beta? But there'll be no output also. अगर मैंने इसको 1 लिखा या कुछ नहीं लिखा, so by default this step 1. अब हम इसको रन करते हैं. ये एमसीक्यू में मैं पक्का दूंगी. ये अगर किसी ने एरर पे टिक मार्क किया ना, फिर देखना प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, नो आउटपुट. ठीक है, तो बिकॉज वो लॉजिकल नहीं है उसके लिए, तो ही इज नॉट generating the numbers. Numbers generating was is like an empty range value for him, empty list for him, है ना? For I in an empty list. अगर empty list दोगे तो वो लूप चलेगा नहीं, क्योंकि वो लिस्ट के कंटेनर के हिसाब से, लिस्ट में कंटेंट के हिसाब से, सॉरी, कितने वैल्यूज है उसके अंदर आ रहे हैं, सीक्वेंस के अंदर आ रहे हैं, वो उसको उठा के यूज कर रहा है बेसिकली लूप को चलाने में. अगर उसके पास कोई वैल्यूज उठ के ही नहीं आ रही तो वो नहीं चला सकता. Hence no output, because syntactically it is not wrong, logically it is wrong. Fine. You have to keep in mind that it is a no output situation, not error. Okay. I've got an answer from Nathik. It says absolutely correct. Nathik, here you're assuming 0 is an even number. Do we take 0 as an even number? I think 0 is neither even nor odd. So that is why it should start from 2. Technically. है ना? तो अगर हमें even numbers up to 20 print करने हैं तो वो 2 से शुरू होना चाहिए. अच्छा, 0 को हम even लेते हैं. Okay, my mathematics has gone little down the drain because it's been our ages we have not done this. Fine, so you can take 0. I used to know that 0 is neither even nor odd. मुझे तो यही ध्यान था. Okay, you people are into mathematics more than me. 0 to 22 because I want him to go till 20. And every time increment by 2 because every other number is my even number. I know that. Print I.
Let us execute. So it should be 0, then 2, then 4, then 6, then 8, then 10, like that. 0 to 20, my even numbers. ठीक है? Great. So basic range को use करना हमें आ गया है. Let's move further down. Odd numbers you do yourself. Multiples of 5 you can do very well. Increment of 5 होगा. So you may try that. 1 to n natural numbers. अच्छा, इसमें एक सिंपल सा हम लोग ऐड कर रहे हैं कि अगर मैं ये चीज यूजर से मांग लूं कि कहाँ तक चाहिए, up to where. So wherever is it n or any other variable given like this, you have to assume that you are asking from the user up to where you want it. So I'm asking him, and based on his input, my code is printing the data. I mean, using the. So I'm saying enter the upper limit, enter the limit or whatever, up to where you want. You pura statement. Or instead of this, you put an n. Of course, you may ask कि कहाँ से शुरू करना है. So then you say enter the lower limit, enter the upper limit, कुछ इस तरीके से इनपुट लेके और वहां पे ये वाला भी वेरिएबल हो जाएगा. तो ऐसे भी हम बिल्कुल कर सकते हैं. हमेशा the input is not static. It is based on the user's data. So आपको मांगना पड़ेगा user. So my limit is suppose I want it till 16 or 17. ठीक है. So same range में ही आप डाल रहे हो उस डेटा को. Just that वो अब वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है. यहाँ तक हमने दोनों क्वेश्चन जो करे थे वो कांस्टेंट से करे. यहाँ पे वो वेरिएबल है. Right? Similarly, the next question is n to m. लोअर भी मांग लिया, अपर भी मांग लिया, मतलब स्टार्ट ऑफ रेंज भी मांग लिया, स्टॉप ऑफ रेंज भी मांग लिया. इसमें सिर्फ ये ध्यान रखना कि बिकॉज इट इज n to m नेचुरल नंबर्स, इफ द यूजर सेज 2 to 15 चाहिए, तो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा n+1. ये जो भी आप वेरिएबल यहाँ यूज करोगे +1. अदरवाइज इट विल नॉट टेक इट